एके एंटनी दिग्गज नेता है और अनिल एंटनी वैसे राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी करी थी, मीडिया सेल के वहां पर केरला में उनको पद भी दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जो डिबेट है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर इस पर राहुल गांधी अपनी बात कह चुके हैं और उसके साथ साथ उसका प्रतिक्रिया, इतनी स्ट्रांग प्रतिक्रिया आई और एक दिग्गज के बेटे ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ी है, उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी सवालों को लेकर सीधे लाइव और एक्सक्लूसिव चलते हैं अनिल एंटनी के पास। एके एंटनी जी के सुपुत्र हैं, सुबह तक कांग्रेस पार्टी में होते थे, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। अनिल एंटनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आज मैं देख रहा था आपकी जो रेजिग्नेशन लेटर आपने लिखा है, काफी तल्खी भरा, काफी नाराजगी भरा रेजिग्नेशन लेटर है आपका। क्यों आपको इतने सख्त शब्दों में अपने रेजिग्नेशन लिखने की आवश्यकता पड़ गई और आपने रिजाइन क्यों किया? कारण बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक चिट्ठी लिखा था, आज इस्तीफा दी और कल मैं एक ट्वीट भी किया है। So I'll just explain why things happen. Like end of the day, everything is very self-explanatory. Yesterday I made a tweet. I've been working in this party just for a short while, and I'm a hardcore believer of the party's beliefs, party's policies, party's ethos. And yesterday morning I made a tweet, and personally I feel that that tweet is nothing against anything the Congress party stands for in any manner. But I was raising some certain points which I believe is for the broader national interest of this country. But sadly, some people got very riled by it and wanted me to delete it, correct it, and I don't think that that was the right thing to do. So I actually decided that I will not do it, because I personally believe that whatever I am doing is based on my own convictions. But then the last 15 to 18, like from yesterday evening, it's even continuing where across my Facebook walls, across my tweets, across my WhatsApp messages, text messages, I am getting so many of these hateful messages, so many of these threats, and so many of these, let's say, obscenities, etc., etc., just because somebody didn't like a tweet, which I personally am absolutely convinced that I did is aligned to the broader interest of the country. And I feel that this is a toxic environment where somebody like me will not be very happy working with, and I have a very thriving professional life, and I'll be just happy with that, and I think I should move on, and that is what I'm doing. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अनिल एंटनी साहब हिंदी में बहुत अच्छा, उनकी हिंदी बहुत मुखर नहीं है, इस वजह से अंग्रेजी का सहारा ले रहे हैं। कोशिश करेंगे उसको पैराफ्रेज भी करते रहे, हम चला भी रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अनिल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, राहुल गांधी ने अभी इस पर सवाल पूछा गया था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, उस पर उन्होंने कहा था कि सच घूम फिर के सामने आ ही जाता है। कांग्रेस पार्टी जो बैन की जो एक बात हो रही है, जो अघोषित बैन की इस डॉक्यूमेंट्री पर बात है, उसके खिलाफ खड़ी हुई है। तो कांग्रेस, आपने कहा कि ये जो ट्वीट में भी आपने लिखा था कि जो लोग एक विदेशी ताकतें हैं, बीबीसी अपने देश की बात करती है, अपनी पोजीशन की बात आगे रखती है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो इस पे स्टैंड है वो क्या देश के खिलाफ है? See, these are different issues. So first of all, like, I am very happy and proud of the fact that we are the world's largest as well as one of the oldest democracies, and in a democracy cannot function without freedom of speech and freedom of expression. So we are, and end of the day, like, I am not for the banning or blocking of any screening of any film, any documentary, any book, any show, etc., because we are a free country, and a free country shouldn't have any of these kind of restrictions. Gee. But I also feel that end of the day we should be cautious about certain things, and those are the cautions which I actually mentioned in that tweet yesterday, where one of the cautions, like, end of the day, this is a documentary, so end of the day BBC is also a reputed channel, but at the same time, let's say this particular documentary, the people behind it are the same people who are the masterminds behind the Iraq war also. Okay. And when these kind of people, like, Iraq war is also an incident which is one of the dark chapters in our modern human history itself, where lakhs of people were dead and millions of people were actually displaced. And when people like that are actually doing a project and bringing into this country, obviously we should be, let's say, cautious about that. And the second thing is, let's say, it is again my core fundamental belief that end of the day we all may have difference in opinion about our politics, we will have difference of opinion in policies, but end of the day partisan politics shouldn't come above national interest, and especially when it comes to core national
interests like sovereignty, security, or strategic affairs. And sadly, I do feel that sometimes that is where things are heading to. And I just had a word of caution in the most mildest of words. And I don't think I have done anything wrong in doing that. राइट, यू डोंट बिलीव दैट आपने कुछ गलत किया, जैसे आप बता रहे थे आप बैनिंग किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ हैं, लेकिन जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे हैं उन देखना यह भी चाहिए कि किस तरीके से उन पोजीशन ली जा रही है। राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा है, वहां पर टॉलरेंस की बात हो रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ हुआ, आपने भी उसको लिखा कि इनटॉलरेंट व्यवहार है, कहीं ना कहीं एक डबल फेस दिखाता है, एक डाइकोटमी है दोनों के बीच में, जो भारत जोड़ो यात्रा कह रही है और जो आपके साथ हुआ? See, end of the day, I have the highest of regards for Mr. Rahul Gandhi and whatever he is trying to accomplish right now by walking from Kanyakumari to Kashmir, trying to unite this country, spreading this message of love, spreading this message of unity. And I feel sad for him because of the people he has surrounded himself with and the kind of people who are actually trying to get this to the ground, because these are all some of the people who are most filled with hate and venom and vile, and these are some of the people who stand for absolutely nothing he is actually trying to accomplish in this country. And with this kind of people, I don't think things will reach anywhere. आपने अपनी चिट्ठी में भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी में कोर्टरी है, बंच ऑफ साइकोफेंट्स, चमचाज। अभी भी आप यही बात कह रहे हैं? कौन है ये लोग जो राहुल गांधी के आसपास है, जिनको आप बंच ऑफ साइकोफेंट्स, कोर्टरी, चमचाज कह रहे हैं? See, I don't want to create personal grudges by naming people or shaming people, etc. Like it was addressed to certain people, and whoever I addressed it to, I am sure they know exactly what I am talking about and who I am talking about. I am sure that they also know that this is what it is, and I would like to leave it as it is. जैसे ही आपने ये रेजिग्नेशन लेटर ट्वीट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से जो कांग्रेस से गए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस ट्वीट का सहारा लिया, आपके रेजिग्नेशन का सहारा लिया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा। क्या ये कहीं ना कहीं संकेत है बीजेपी में जो आपको समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपके समर्थन में खड़े हुए हैं, इन योर सपोर्ट, उसको आप कैसे देखते हैं? See, at this moment, like, I am not firing for end of the day, like I said, like we have like end of the day, even as far as this documentary is concerned, me and the BJP actually have differences. I am not for the banning or blocking of any of these documentaries. It is something else which was my core issue. And end of the day, me and the BJP are also people who actually have a lot of differences. We have fundamental differences, and that is what it is. So end of the day, just because we agree on something, which is, let's say, on something which I believe that 99% of this country actually should agree on, and that is that partisan politics shouldn't come around above national interest. I don't think we agree on a lot of things too. कांग्रेस से आपने अपना नाता छोड़ दिया है, क्या किसी और पार्टी की तरफ आप रुख कर रहे हैं? किसी और पॉलिटिकल पार्टी में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपका फ्यूचर है? It is safe to say that at this moment I am not thinking of any political outlet. I am actually just focusing on my own professional work, my work in technology, cyber security, etc. because I think that is my passion, that is my main interest, that is my expertise, and I would like to stick on to that for this moment. आपके पिता ए.के. एंटनी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, काफी और उन्होंने मिनिस्ट्रियल कैपेसिटी में काम किया है, बड़ी पोजीशंस उन्होंने हासिल की है कांग्रेस पार्टी में, काफी उन्हें 10 जनपद के भी क्लोज माना जाता है। आपको लगता है कि आपने अपने पिता को एक मुश्किल स्पॉट में डाल दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ा उन्हें एम्बैरेस कर दिया है इस रेजिग्नेशन लेटर से? I don't think so at all. Like, end of the day, my father is working for the Congress party from 1958-59 onwards. It's a lot of time. Like, he has retired from parliamentary politics. He has head back to Kerala. He is living a semi-retired life without much interest in national nor any state politics. And end of the day, the one thing, like me and my dad, like we agree and disagree on a lot of things, but the one thing he has taught me, which I agree with, is end of the day, whatever decision you make it based on your own convictions and your own conscience, and that is what I did. And maybe he may not agree with my decision, but the decision making process I am sure he will resonate with and he may understand it. Right. आपके पिता ने एक रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दी थी 2014 में, उसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान भी दिया कि कांग्रेस पार्टी को अगर आगे चलना है तो उन्हें
हिंदुओं के सपोर्ट की, मेजॉरिटी पार्टी के सपोर्ट की आवश्यकता होगी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? See, I think it is high time that we actually let this discourse actually go behind all these religions, etc., because there are other issues in this country. And the Congress Party I believed in, and the Congress Party I know is a truly secular outfit that doesn't differentiate between any minorities and majorities, etc., and we are actually focusing on broader national interest. And I am fairly sure that that is what my father also meant in his report, and whatever he has written in the report, I 110% agree with it. शशि थरूर के बारे में आपने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उनका आपको बहुत सहयोग मिलता रहा जब से आप इस पार्टी में आए हैं। उनसे आपकी कुछ बात हुई? किसी ने आपको मनाने की कोशिश की, कुछ समझाने की कोशिश की? No, sadly, like things, the last 24 hours, things has been going at a very fast pace, and I sadly haven't had any time to speak to him nor have any chat with him. But I'm fairly sure that one of these days I will have. I'm sure I will. Like in the last many years, even before I started in politics, like I always used to run my opinions through him on many things. He's one of my mentors and one of my best well wishers. And definitely I will ask for his advice, but at this moment I haven't interacted with him also. क्या आपके पिता से आपकी कोई बातचीत हुई? उन्होंने आपको कुछ कहा इस बारे में? Again, I haven't had a chat with him also after these incidents. Again, he is right now in one of the villages in Kerala attending a family function, and right now this is not the opportune time, but I'm fairly sure that at some point we will have a conversation on this. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर अनिल एंटनी फॉर स्पीकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं